लेट्स सी अगेन मिसब्रांडेड ड्रग। किसको बोलेंगे मिसब्रांडेड ड्रग? मिसब्रांडेड ड्रग किसको बोलेंगे? अगर ड्रग जो है आपका इट इज अ कलर्ड कोटेड और पाउडर्ड और पॉलिश्ड, इफ द ड्रग इज कलर्ड कोटेड powdered or polished so that damage is concealed, and if drug is made to appear of better or greater therapeutic value than really it is, मतलब वो उसका उतना वैल्यू थेरेपेटिक वैल्यू नहीं है लेकिन उसको दिखाया गया है कि ज़्यादा है, तो वो मिसब्रांडेड। इफ ड्रग इज नॉट लेबल इन द प्रिस्क्राइब मैनर, इसके ऊपर डायरेक्ट 2-3 बार आ चुका है। इफ ड्रग इज नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब मैनर एज पर द डीएनसी एक्ट इट इज कंसिडर्ड एज, ठीक है, मिसब्रांडेड। Then if drug is labeled in such a manner that any statement or any design or any device that makes false claim for drug or use of drug is false or misleading, that is known as a misbranded. Now next one is a spurious drug. Spurious drug किसको बोलेंगे? If drug is imported under the name of another drug. क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है। If drug is imported under the another name of drug, जैसे आपको इंपोर्ट कर रहे हैं पैरास्टामोल, तो उसको इंपोर्ट कर रहे हैं कि इंपोर्ट कर रहे हैं एस्पिरिन के नाम से, so that is a spurious drug if drug is imported under the name of another drug, okay, or it is a imitation or substitute for another drug. Imitation मतलब copy, so if it is a imitation or substitute for another drug which resembles to another drug, a drug in manner to hide the identity of the another drug. तो स्पूरियस ड्रग मतलब क्या है? यहाँ पे देखो, इफ ड्रग इज इम्पोर्टेड अंडर द नेम ऑफ अनदर ड्रग, एक की बजाय दूसरा ही, एक के नाम पे दूसरा ही ड्रग इंपोर्ट किया, वो हो गया आपका स्पूरियस ड्रग, ठीक है। या फिर अगर ड्रग जो है वो किसी का कॉपी है, दूसरे ड्रग का इमिटेशन है, सो इफ दैट ड्रग इज सब्स्टिट्यूट फॉर अनदर ड्रग और इफ दैट ड्रग रिजेंबल्स टू अनदर ड्रग in the manner to hide the original identity of that drug, then it is a spurious drug. Now, if a drug bears a label or container or name of company which is actually not a in a exist or it is a fictitious company, मतलब आप कोई फॉर्मुलेशन है उसके ऊपर कंपनी का नाम है लेकिन अगर सर्च करोगे तो वो कंपनी है ही नहीं, सो इफ इट बियर्स अ लेबल और कंटेनर और नेम ऑफ कंपनी which actually does not exist or it is a fictitious, अगर कोई मतलब होता है ना कि बेनामी कंपनी है या फिर कोई गलत, मतलब फिक्शियस मतलब ये ऐसा होता है कि वो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसका लेबल है। सो इफ ड्रग इज इम्पोर्टेड अंडर द नेम ऑफ अनदर ड्रग, इफ ड्रग इज imitation or substitute of another drug and are resemblance to another drug in a manner to hide the identity of another drug. If it is bare label or container or name of company which is not exist or it is a fictitious, so that is known as a spurious drug, ठीक है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। Now what do you mean by central register? Next one is a central register. Central register. Central register. So central register means the register of pharmacist maintained by Central Council. जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है वो एक रजिस्टर मेंटेन करता है फार्मासिस्ट का, उसको बोलते हैं सेंट्रल रजिस्टर। तो रजिस्टर्ड मेंटेन बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, इट इज नथिंग बट द सेंट्रल रजिस्टर। सो इट इज अंडर द सेक्शन 15A of Pharmacy Act 1948. So Pharmacy Council of India has to maintain our register of pharmacists known as a central register and under the section 15A of Pharmacy Act 1948, that is central register। तो आपका जब नाम एंटर होता है रजिस्टर में वो सेंट्रल रजिस्टर नहीं होता है, वो स्टेट रजिस्टर होता है, उसको बोलते हैं फर्स्ट रजिस्टर। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो आपका फार्मेसी का, तो वो जब स्टेट फार्मेसी काउंसिल में जाके आप नाम पंजीकरण करते हो तो दैट रजिस्टर इज नोन एज द फर्स्ट रजिस्टर, ओके। उसके बेसिस पे ही सेंट्रल रजिस्टर बनता है। नाउ मैजिक रेमेडीज, व्हाट डू यू मीन मैजिक रेमेडीज? अंडर मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 it includes talismans, mantras, kavachas or any other charm of any kind which is elevate to possess a miraculous power for diagnosis, treatment and mitigation, prevention of disease, possesses a power of alteration of human function, so that is known as magic remedies। मतलब कोणी जर तुम्हाला एक तलिस्मी मोती दिला, कोणी जर तुम्हाला काही मंत्र दिला, कोणी जर तुम्हाला काही कवच दिलं, तो माणूस सांगत असेल की नाही याच्यामध्ये एकदम वेगळी पॉवर आहे तुम्हाला क्लिअर करण्याची,
ट्रीटमेंट करण्याची, that is a magic remedy. So it includes talismans, mantras and kavachas, and any other charm like tai, okay, etc. etc. So which elevate to possess a miraculous power for diagnosis, treatment and cure. That is magic remedy under Magic Remedies Act. Now, what is meant by dutiable goods under the Medicinal and Toilet Preparation Act? Medicinal and Toilet Preparation Act has been subject to duties excise levied under the act. मतलब जो ड्रग, जो भी प्रोडक्ट में आपका अल्कोहल आएगा, अल्कोहल है, या फिर जो भी प्रोडक्ट में कोई नार्कोटिक ड्रग है, या फिर प्रोडक्ट कंटेनिंग अल्कोहल और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, दे आर लाइबल फॉर, मतलब ड्यूटी मतलब टैक्स होता है. सो मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन हैज बीन सब्जेक्ट फॉर ड्यूटीज ऑफ एक्साइज लेविड अंडर दैट. मतलब मेडिकल टॉयलेट प्रिपरेशन को एक टैक्स देना पड़ता है अल्कोहल का, और जो भी प्रोडक्ट के लिए ड्यूटी टैक्स होता है उसको बोलते हैं ड्यूटीएबल गुड्स. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डीनेचुरल स्पिरिट? इट मींस अल्कोहल ऑफ एनी स्ट्रेंथ, अल्कोहल ऑफ एनी स्ट्रेंथ, स्टेट नहीं, which has made unfit for human consumption by addition of substances approved by state government. तो ये जो अल्कोहल होता है नॉर्मली दो टाइप का होता है आपका, एक ड्रिंकिंग अल्कोहल होता है और दूसरा एक होता है डी नेचुरल स्पिरिट. डी नेचुरल स्पिरिट मतलब क्या? ये अल्कोहल which is rendered unfit for consumption by denaturing it. For example, एक आपने फार्माकोग्नोसी में एक अल्कोलाइड सुना होगा, ब्रूसिन, स्ट्रिक्निन एंड ब्रूसिन फ्रॉम स्ट्रिक्नस नक्स vomica. ब्रूसिन जो है that is alcohol used for the denaturation of spirit. So it is a alcohol of any strength made unfit for human consumption by addition of third substances approved by सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. डीनेचुरल स्पिरिट क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है. व्हाट इज प्रूफ स्पिरिट क्वेश्चन इसके ऊपर भी आ चुका है. सो प्रूफ स्पिरिट मींस व्हाट? ए स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल व्हिच इज कैलकुलेटेड एज अ प्रूफ डिग्री एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड. द 100% प्रूफ स्पिरिट इज नथिंग बट द 57% इथेनॉल वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. 57% इथेनॉल वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज नोन एज 100% प्रूफ स्पिरिट. क्वेश्चन इसके ऊपर अभी आ चुका है. एक्चुअली एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन इज 57.1. तो क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका. पहले जमाने में क्या था कि अल्कोहल का क्वालिटी चेक करने के लिए कोई मेथड नहीं था. उस टाइम पे अल्कोहल का मेथड क्वालिटी कैसे चेक करते थे कि अल्कोहल पोर करते थे कहाँ पे, जो गन होता है, बंदूक होता है जो गन, वहाँ पे पोर करते थे गन पाउडर में और उसको इग्नाइट करते थे. अगर वो पूरा जलता है तो उसको बोलते थे 100% proof. So proof spirit is nothing but the strength of alcohol calculated as a proof degree as per Indian standard. 100% proof means 57% volume by volume. Now what is meant by bonded laboratory? इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. So bonded laboratory, these are the definition under Medical and Toilet Preparation Act. What is bonded laboratory? So bonded laboratory means the premises licensed for the manufacturing of or storage of medicinal and toilet preparation containing alcohol, Indian hemp or narcotic drugs or other products on which duty has not been paid. मतलब उनके ऊपर टैक्स जो है वो भरा नहीं है. सो बॉन्डेड मतलब क्या? बॉन्ड किया है, उसका बॉन्ड किया है. किसने बॉन्ड किया है? गवर्नमेंट ने. सो बॉन्डेड लेबोरेटरी के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं जैसे फिलिंग, ऑब्टेनिंग और रिमूवल ऑफ अल्कोहल एंड नार्कोटिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द स्टोरेज. So it is under the observance of narcotic commissioner, excise officer. Bonded means what? Duty has not been paid. याद रखो, bonded duty not been paid, non-bonded duty has been paid. मतलब आप याद रख सकते हो. बॉन्डेड मतलब बांधेल कधी असतो आदमी. सो मी याचा बांधेल आहे. बांधेल कधी असतो? जर त्याच्याकडनं काही घ्यायचं असेल तर बांधेल असतो. सो बांधेल मतलब ड्युटी हॅज नॉट बीन पेड, टॅक्स पे नाही केलेला. अँड नॉन बॉन्डेड मतलब टॅक्स पे केला आहे. बांधेल नाही मतलब मी कोणाचा बांधेल नाही काम करायला. याचा अर्थ काय? मी कोणाकडनं काही घेतलेलं नाहीये, त्यामुळे मी काम केलं काय नाही केलं काय फरक पडत नाही. मी याचा बांधेल आहे. जसं मी तुमचा बांधेल आहे. मी तुमचा बांधेल कायसाठी? लेक्चर घेण्यासाठी मी तुमचा बांधेल आहे, कारण मी तुमच्याकडनं पैसे घेतले. सो म्हणजे बॉन्डेड लॅबोरेटरी मीन्स द लॅबोरेटरी और प्रेमाइसेस विच आर licensed for manufacturing, storage of medicinal and toilet preparation containing alcohol, Indian hemp, narcotic drug or any other narcotic substance on which duty has not been paid. Bonded, okay. Non-bonded means what? The same thing on which duty has been paid.
क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं, याद रखो क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज नाउ डेफिनेशंस अंडर द नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक एक्ट, एनडीपीएस एक्ट 1954 1955, इसके अंडर कितने डेफिनेशन नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। फर्स्ट वन इज illicit traffic, first one is known as illicit traffic. So what is it? It includes cultivating and gathering of any part of coca plant, opium plant, cultivation and gathering of any, gathering मतलब collection, cultivation and gathering of any part of coca opium plant, or engaged in the production, manufacturing, sale, purchase, supply, distribution, transportation, import, export of any narcotic drug and psychotropic substance, that is known as illicit traffic, or financing of above activities, or letting use the premises to carry out these activities. ये सब क्या है? illicit traffic. illicit traffic मतलब क्या? Cultivation, gathering of any part of coca plant, opium plant, or engaging in the production, manufacturing, sale, purchase, supply, distribution, transportation, import, export of narcotic drug and psychotropic substances, और फाइनेंसिंग मतलब इसको फाइनेंशियली सपोर्ट करना, फाइनेंसिंग ऑफ एनी अबव एक्टिविटीज, हैंडलिंग और लेटिंग यूज योर प्रेमाइसेस फॉर कैरिंग आउट सच नोन एज इलिसिट ट्रैफिक। अगर इसमें फंस गए, ये ट्रैफिक में फंस गए तो इट इज अ वन वे ट्रैफिक, देयर इज नो टू वे। एक बार अंदर गए तो फिर आपको फाइन कितना है 1 to 1.5 to 3 lakhs, पेनल्टी, rigorous imprisonment up to 10 years, which may extend up to 20 years. What is meant by cannabis? Cannabis charas is nothing but the crude and purified resin obtained from cannabis plant. Question आ चुका है. What is a charas? Charas is nothing but the crude resin obtained from cannabis plant. Cannabis plant, including concentrated preparation. Okay, resin नहीं है. Resin known as a hashish oil or liquid hashish. What is ganja? Ganja is nothing but the flowering top of cannabis plant, excluding seeds and leaves. Any mixture of above material in the form of or prepared from them. जैसे होता है ना भांग, भांग पे तत्व, ये भांग पे तत्व में जो गांजे से cannabis means charas. Charas is nothing but the crude and purified resin obtained from cannabis plant. Crude and purified resin obtained from cannabis plant. The concentrated preparation resin known as hashish oil or liquid hashish. Then ganja is nothing but the flowering tops of cannabis plant. Okay. Then any mixture of above known as a cannabis. Now, what is meant by coca derivative? Crude cocaine, egonine, and its derivative, methyl ester of benzyl egonine and other preparation containing more than 0.1% cocaine. That is known as a coca derivative. What is meant by selling price? Now it's under the DPCO Act. Okay, DPCO Drug Price Control Order उसके अंडर के डेफिनेशन चलोगे. Selling price, so prices fixed by government time to time for the scheduled formulation in accordance with the provisions of the DPCO Act under paragraph G, known as a selling price. Question आया था what is selling price? So prices of bulk drug fixed by government time to time for scheduled formulation in accordance with the provisions of the DPCO Act under paragraph G, known as a selling price. Reserve मतलब reserve created by appropriation of profit but shall not include reserve provided for contingent liability, dispute claim, goodwill. इसके ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं आया है. रिजर्व मतलब क्या? While calculating the retail price of drug, उसमें मटेरियल का कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट वगैरह सब आता है. तो फ्री रिजर्व मतलब क्या? Reserve created by appropriation of profit but shall not include the reserve provided by contingent liability, dispute claims, goodwill, etc. Tax return, profit before payment of income tax and surtax includes such other expenses which do not form a part of cost of formulation. The pre-tax return. This landed cost, इसके बारे में क्वेश्चन आ चुका है. landed cost, selling price के बारे में क्वेश्चन आ चुका है. landed cost के बारे में क्वेश्चन आ चुका है. What is landed cost? It means the cost of import of formulation. Means the cost of import of formulation inclusive of custom duty and clearing charges. That is a landed cost. क्वेश्चन आ चुका है. landed cost मतलब क्या? कुछ import किया है आपने, import करके कहाँ कैसे आएगा? हवाई जहाज से आएगा तो यहाँ पे लैंड करेगा. लैंड करने के बाद उसका कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा, क्लियरिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा. सो इट मीन्स द कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट ऑफ फॉर्मुलेशन inclusive of custom duty and clearing charges, known as the landed cost.
व्हाट इज द रिटेल प्राइस ऑफ ड्रग? रिटेल प्राइस ऑफ ड्रग, फॉर्मूला फॉर रिटेल प्राइस, क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुके हैं 2 दिन। फिक्स प्राइस फॉर शेड्यूल फॉर्मुलेशन बाय गवर्नमेंट अंडर प्रोविजन ऑफ DPCO एक्ट, रिटेल प्राइस ऑफ फॉर्मुलेशन कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फॉर्मूला नोन एज दिस फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? देखो सिंपल है, रिटेल प्राइस इज इक्वल टू MC plus CC plus PM plus PC into 1 plus MAPE divided by 100 plus ED, PMC plus CC plus PM plus PC into 1 plus MAPE divided by 100 in plus excise duty। MC क्या है? मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट। CC क्या है? कन्वर्जन कॉस्ट। MC क्या है? मटेरियल कॉस्ट। CC क्या है? कन्वर्जन कॉस्ट। PC क्या है? पैकिंग चार्जेस। PM क्या है? पैकेजिंग मटेरियल कॉस्ट। ED क्या है? एक्साइज ड्यूटी। MAPE क्या है? मैक्सिमम अलाउेबल पोस्ट मार्केटिंग एक्सपेंसेस, मैक्सिमम अलाउेबल पोस्ट मार्केटिंग एक्सपेंसेस, दैट इज MAP। और एक बार देखो फॉर्मूला बोलना नहीं चाहिए, क्वेश्चन आता है। क्या है? रिटेल प्राइस ऑफ ड्रग इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। इज रिटेल प्राइस इज इक्वल टू MC plus CC plus PM plus PC 1 plus MAPE divided 1 plus 1 plus MAPE divided by 100 plus ED। MC क्या है? मटेरियल कॉस्ट। CC क्या है? कन्वर्जन कॉस्ट। PC क्या है? पैकेजिंग चार्जेस। PM क्या है? पैकेजिंग मटेरियल कॉस्ट। ED क्या है? एक्साइज ड्यूटी। और MAPE क्या है? मैक्सिमम अलाउेबल पोस्ट मार्केटिंग एक्सपेंस। कैन कैलकुलेट द रिटेल प्राइस ऑफ ड्रग बाय दिस फॉर्मूला। मैंने पहले ही बोला है कि पहले क्या था, पहले ज़माने में डिस्पेंसिंग था, मतलब पूरा मटेरियल, जैसे किसी ने बोला कि इसको पैरासिटामोल का सब्सक्रिप्शन दे दो, तो वो बना के दे देगा वो, तो उसमें पैरासिटामोल का चार्जेस लगेगा, उसमें कन्वर्जन कॉस्ट लगेगा, पैकेजिंग मटेरियल कॉस्ट लगेगा, पैकेजिंग चार्जेस, वो सब जोड़ के ये फॉर्मूला बनता है। रिटेल प्राइस इक्वल टू MC प्लस CC प्लस PM प्लस PC 1 प्लस MAPE डिवाइड बाय 100 प्लस ED एक्साइज ड्यूटी। अब MAPE मींस मैक्सिमम अलाउेबल पोस्ट मार्केटिंग एक्सपेंसेस, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। ये क्या है? MAPE मींस का फॉर्मूला देगा आपको, MAPE क्या है? MAPE इज द मैक्सिमम अलाउेबल पोस्ट मार्केटिंग एक्सपेंसेस। ये कितने होने चाहिए? उसके लिए MAPE शुड नॉट एक्सीड कैटेगरी A ड्रग, कैटेगरी A ड्रग के लिए कितना है? 75%। फॉर कैटेगरी A ड्रग 75% फॉर कैटेगरी A ड्रग व्हिच आर इंक्लूडेड इन द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। जो ड्रग आता है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में आता है, तो उसके लिए 75% मैक्सिमम अलाउेबल पोस्ट मार्केटिंग। कैटेगरी B के लिए होता है 100%। व्हाट इज कैटेगरी B? कैटेगरी सेकंड इज these are the drug other than category 1 drug. For display of price under the DPCO or scheduled formulation, तो उसके ऊपर ये लेवल होना चाहिए, रिटेल प्राइस नॉट टू बी एक्सीड। ये फॉर शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन, जो शेड्यूल फॉर्मुलेशन है मतलब जो शेड्यूल के अंदर आता है, तो उसके वहाँ पे ये लिखा होना चाहिए रिटेल प्राइस नॉट टू बी एक्सीड, और उसके बाद में आना चाहिए लोकल टैक्सेस एक्स्ट्रा। पहले ज़माने में होता था। मैं 2008 में मैं मेडिकल प्रैक्टिस करता था, उस टाइम पे जो रिटेल प्राइस है वो प्लस लोकल टैक्स एक्स्ट्रा, उस टाइम पे क्या था? टैक्स था, उस टाइम पे एक टैक्स था, वो टैक्स ऐड करना पड़ा। फॉर नॉन शेड्यूल फॉर्मुलेशन मैक्सिमम रिटेल प्राइस इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस